Good afternoon, student. I hope you will fit and fine at your home. And yesterday, I completed the chapter a new cycle bicycle in a good repair. And now we are starting a new chapter and last chapter in your book, The Story of Cricket. Sport is an integral part of a healthy life. It is one way in which we amuse ourselves, compete with each other, and stay fit. Among the various sports such as hockey, football, and tennis, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. How much do we really know about the game called cricket? स्पोर्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ। स्पोर्ट एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है हमारे स्वस्थ जीवन का। इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज आवर सेल्फ। इट इज़ वन वे, एक तरीका है जिसमें हम उसे मतलब आनंद लेते हैं, इसे देख कर एंटरटेन होते हैं, कंप्लीट विथ ईच अदर, एक दूसरे से, एंड स्टे फिट, और फिट भी रहते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वे वी एंटरटेन देमसेल्फ एंड वी आल्सो बिकम फिट, रिमेन फिट। अमॉन्ग द वेरियस स्पोर्ट, और बहुत से स्पोर्टों के बीच में, सच एज हॉकी, जैसे कि एक हॉकी है, एंड फुटबॉल एंड टेनिस है, क्रिकेट अपियर टू बी द मोस्ट अपियरिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टूडे। क्रिकेट बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट का सोर्स हो गया है आज के दिन, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, इंटरनेशनल पे में। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट? हाउ मच डू वी रियली नो, हम कितना जानते हैं इस गेम के बारे में जिसे हम किसी क्रिकेट कहते हैं, कितना जानते हैं? एंड ऑल दी थिंग वी हैव नो इन दिस चैप्टर। At first, you know very well the first step of the reading. In yesterday, I read a few chapter. But now let's start the reading of the chapter, the story of the cricket. Cricket grew out of many stick and ball games played in England 500 years ago. The word bat is an old English word that simply means stick or club. By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a district game. Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey stick, curving outward at the bottom. There was a simple reason for this. The ball was bowled underneath along the ground, and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end in a draw. No other modern team sport takes even half as much time to complete. A football match is generally over in an hour and a half. Even baseball completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited over match, the shortened version of the modern cricket. Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or shape of the ground is not. Most other team sports such as hockey and football lay down the dimensions of the playing area. Cricket does not. Grounds can be oval like Adelaide Oval or nearby circular like Chepauk in Chennai. A sixth of the Melbourne cricket ground need to clear much more ground than it does at Firoz Shah Kotla in Delhi. There is a historical reason behind both these oddities. Cricket was the earliest modern team sport to be codified.
The first written law of cricket were drawn up in 1744. They stated the principals shall choose from amongst the gentlemen present to umpire who shall absolutely decide all dispute. The stump must be 22 inches high and the wall across them 6 inches. The wall must be between 5 and 6 on and 2 step of stem 22 yards. Now we read this chapter as well as we focus the some word meaning. And student, all of you, at first you will write the all word meaning of this chapter. Okay. The first word meaning is in backyard no one. ड्रा ड्रा यू नो वेरी वेल, कोई मैच जो होता है ड्रा होता है जिसमें ना को नो वन टीम विन, जिसमें कोई टीम नहीं जीतती है, उसे ड्रा कहते हैं. रिजल्ट ऑफ अ गेम इन विच नाइदर साइड विन और लॉस, कोई भी साइड जीत हार नहीं होती है. ड्रा पहले मैच ड्रा होते थे इन द बिगिनिंग टर्म, बट नाउ यू नो वेरी वेल द मॉडर्न टाइम द क्रिकेट हैव टोटली चेंज्ड. द मतलब ड्रा नहीं होते हैं मैच, एंड इन प्लेस ऑफ ड्रा द मैच बिकम टर्न इनटू सुपर ओवर. मैच किस में बदल जाता है? सुपर ओवर में. एंड वन ओवर ईच टीम प्लेड एंड मोर रन दैट टीम मेक दैट इज विनर. ओके. नेक्स्ट इज बेसबॉल. एक बेसबॉल गेम है. आप वर्ड मीनिंग में सिर्फ गेम ही लिख देना, बाकी आप समझ लेना. पॉपुलर इन द यूएसए में पॉपुलर है. प्लेड विद अ बैट एंड बॉल बाई टू टीम ऑफ 9 प्लेयर. बैट एंड बॉल के साथ खेला जाता है. टू टीम में 9 प्लेयर होते हैं. ईच वन ऑफ फील्ड विथ 4 बेस होते हैं. बेसबॉल, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बेसबॉल. डायमेंशंस, लंबाई चौड़ाई कहते हैं. लेंथ एंड विड्थ एटसेट्रा, लंबाई चौड़ाई डायमेंशन. ओबेल, ओबेल एक फील्ड है, लेकिन रियल में ओबेल जो फील्ड है उसका आकार जो है एक अंडे की तरह है. तो देन ओबेल मीन्स वी कैन से शेप्ड लाइक एन एग, मतलब एक अंडे की तरह शेप होना, ओबेल फील्ड का है. एंड इंडिया में भी अपने बहुत अच्छे फील्ड है, जैसे कोलकाता में ईडन गार्डन है, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला है, हैदराबाद बहुत से है. हैदराबाद में भी सबसे बड़ा द बिगेस्ट स्टेडियम इज मेड इन हैदराबाद. कोडिफाइड, कोडिफाइड मीन्स स्टैंडर्डाइज विद रूल एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन को सेटअप करना. Apart, the world's first cricket club was formed of Hambledon in the 1760 and the Melbourne Cricket Club, मेलबर्न है जी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC, फुल फॉर्म MC मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC was founded in 1787. During the 1760s and 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. This change gave bowlers the option of length deception through the air plus increased space. It's also opened new possibilities for spin and swing. In response, batsmen had to master timing and shot selection. One immediate result was the replacement of the curved bat with the straight one. The weight of the ball was limited to between 5 to 5 ounce and the width of the bat to 4 inches. In 1774, the first leg before law was published. Also around this time, a third stump became common. By 1780, 3 days had become the length of major match, and this year also saw the creation of the first six-seam cricket ball. If you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed
with changing times, and yet fundamentally remained true to its origins. In rural England, cricket's most important tools are all made of natural, pre-industrial materials. The bat is made with leather, twins, and cork. Even today, both bats and ball are handmade, not industrially manufactured. The material of the bat changed slightly over time. Once it was cut out of a single piece of wood, now it consists of two pieces. The blade, which is made out of the wood of the willow tree, and handle, which is made out of cane, that became available as European colonials and trading companies established themselves in Asia. Unlike golf and tennis, cricket has, my dear student, you are looking the picture. In this picture, a rough and ready cricket game being played in the village in the Himalayas में 1894 को ऐसे गेम खेला जाता था. एंड नोटिस द होम मेड विकेट हैं एंड बैट्स हैं कर्व्ड आउट ऑफ रफ विट ऑफ वुड है लकड़ी के. देख रहे हैं, यू आर लुकिंग. रिफ्यूज्ड टू रिमार्क नहीं रिमेक इट्स टूल with industrial or man-made materials, plastic, fiberglass, and metal, have been firmly rejected. What in the matter of protective equipment, cricket has been influenced by the technological change. The invention of vulcanized rubber led of the introduction of pads in 1848 and a protective glove soon afterward, and the modern game would be unimaginable without helmet made out of metal and synthetic lightweight materials. Now, student, you will understand that in this chapter, the reality of cricket has been open. कि बैट when did the best published, when पैड published, मतलब कब बैट आए थे, कौन सी सन में पैड आया था, कौन से ईयर में आपको मतलब विकेट थे, इन लास्ट 18th century में लोग कैसे खेलते थे, इस तरीके से मतलब क्रिएशन ऑफ क्रिकेट कैसे हुआ है. हेयर कंप्रीहेंशन चेक है, आई विल डू इट लेटर. The origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrian. The Parsis brought into close contact with the British because of their interest in trade, and the first Indian community to westernize. The Parsis founded the first Indian cricket ball club, the Oriental Cricket Club, Oriental Cricket Club in Bombay in 1848. Parsi club were funded and sponsored by Parsi businessmen like the Tatas and Wadia. The white cricket elite in India offered no help to the enthusiastic Parsis. In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana and White Only Club and the Parsi cricketers over the use of the public park. The Parsis complained that park was left unfit for cricket because the ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface. When it became clear and that colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, the Parsis built their own Gymkhana to play cricket in. The rivalry between the Parsi and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers of Indian cricket. A Parsi
team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889. Just 4 years after, and the one word meaning here is a patriots. Compatriots means होता fellow countrymen, देशवासी. And the Parsi team, the first Indian cricket team over the Parsi team, the first you are looking at the picture, the Parsi team, the first Indian cricket team to tour England in 1886. Not all along with the traditional cricket standards, they went Parsi cap. देखिए ये first Indian team है in the picture. The foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual Dada Bhai Norji. Modern cricket is dominated by test and one day internationals played between national teams. The players who became famous who became the player who became famous who live on in memories of cricket's public are those who have played for their country. The players Indian fans remember even now are those who were fortunate enough to play test cricket. CK Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vithal and Palwankar Wallo have been forgotten. Even though Naidu was the past his cricketing prime, when he played for India in its first test match against England, starting in 1932, his place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain. India entered the world of test cricket in 1932, a decade and a half before it became an independent nation. This was possible because ये पलवाकर वालों वॉर 1870 पिक्चर में देख रहे हैं आप एट ए टाइम व्हेन इंडियन वर नॉट अलाउड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट ही वाज द ग्रेटेस्ट इंडियन स्लो बॉलर ऑफ हिज टाइम यू आर लुकिंग इन पिक्स very lengthy chapter my student dear student. Test cricket from its origins in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nation. The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settler colony. Similarly, the small countries of the Caribbean that together make up the West Indian team were the British colonies till well after the Second World War. Television coverage changed cricket. It expanded the audience for the game by becoming beaming cricket into small towns and villages. It also broadened cricket's social base. Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes. The technologies of satellites, television, and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket. Matches in Sydney could be watched live in Surat, since India had the largest viewership for the game amongst the technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket. Matches in Sydney could now be watched live in Surat, since India had the largest viewership
or the game amongst the cricket playing nation and the largest market in the cricketing world. The game center of gravity shifted to South Asia. This shift was symbolized by the shifting of the ICC headquarters from London to tax-free Dubai. 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsi, had to struggle to find an open space to play in. Today, the global marketplace has made Indian players the best paid, most famous cricketer in the game, men from whom the world is at stage. This transformation was made up of many smaller changes. The replacement of the gentlemanly amateur by the paid professional. This trump of the one-day game as it overshadowed the Test cricket in terms of popularity, and the remarkable change in global commerce and technology. The chapter reading of the chapter, my dear student, has been finished, and the writer is Ramachandra Guha, adapted from chapter 7 of Indian and Contemporary World First Textbook in History for class 9th NCERT कि यहाँ से आपके पिकअप हुआ है, लिया गया है. Now we explain the chapter. It's very lengthy chapter. स्पोर्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ. स्पोर्ट एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे हेल्दी लाइफ जिंदगी का, स्वास्थ्य भरी जिंदगी का. इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज आवर सेल्फ. यही एक तरीका है जिसमें हम अपने आप को आनंदित करते हैं, अपने आप को एंटरटेन करते हैं, कंप्लीट विद ईच अदर, एक दूसरे से, एंड स्टे फिट भी रहते हैं. अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, उन काफ़ी खेलों के बीच में जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है, क्रिकेट अपीयर्स मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे. क्रिकेट जो अब बहुत ही इंटरटेनमेंट आज के में राष्ट्रीय इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल वे पे देखा जाए तो काफ़ी इंटरटेनमेंट का सोर्स हो गया है अब. हाउ मच टू बी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट. हम क्या कितना जानते हैं, हाउ मच कितना, बी रियली नो हम जानते हैं अबाउट द गेम, इस गेम के बारे में जिसे क्रिकेट कहते हैं. लेट्स रीड इन दिस चैप्टर द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट ग्रो आउट द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर अगे. क्रिकेट ग्रो आउट आया था सामने में स्टिक और बॉल गेम के रूप में इंग्लैंड में. इंग्लैंड क्रिकेट की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है 500 साल पहले, 500 ईयर अगो. द वर्ड बैट, जो शब्द बैट है, इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड, एक इंग्लिश का पुराना शब्द है. दैट सिंपली मीन स्टिक अ क्लब, जिसका मतलब होता है स्टिक या क्लब. बाय द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में, क्रिकेट हैड इवॉल्व्ड इनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज डिस्ट्रिक्ट गेम के रूप में इसकी जान पहचान होने लगी. टिल द मिडिल ऑफ द सेंचुरी, 18th सेंचुरी, लेकिन 18वीं शताब्दी के बीच में, बैट पर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक. बैट वैसे ही आते थे, सेम बिल्कुल जैसे कि अपनी हॉकी स्टिक होती है, पैसे बैट आते थे. अब की तरह बैट नहीं आते थे, पहले की तरह बैट आते थे. बैट पर हम कर्विंग आउटवर्ड, आगे से थोड़े घूमे हुए. एट द बॉटम देयर वाज अ सिंपल रीजन फॉर दिस, इसका सिंपल रीजन एक यही था. द बॉल वाज बोल्ड अंडरटेकिंग अलॉन्ग द ग्राउंड एंड द कर्व्ड एंड ऑफ द बैट गिव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ पिकिंग कॉन्टेक्ट. नीचे कर्व इस मारे होता था जिससे कि बैट्समैन को ज़्यादा चांस मिले बॉल को कांटेक्ट में लाने के बैट के. वन ऑफ द पैकुलरिटीज ऑफ क्रिकेट इज दैट, एक पैकुलरिटी क्रिकेट के बारे में ये भी है, टेस्ट मैच कैन गो 5 डे स्टिल एंड, की जो टेस्ट मैच होते थे, चलते थे टेस्ट मैच, वो 5 दिन चलते थे इन अ ड्रा. और मतलब जब इसके बाद अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो ड्रा हो जाते थे. नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन, नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट एंड ड्रा, नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच एज टू कंप्लीट. कोई भी ऐसी टीम नहीं होती स्पोर्ट की टेक ओवर हाफ एंड मच कंप्लीट, हाफ में कंप्लीट कर ले. आ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन ओवर एंड हाफ, 1 या 1.5 घंटे में फुटबॉल मैच खत्म हो जाता है.
इवन बेसबॉल कंप्लीट 9 इनिंग, बेसबॉल 9 इनिंग में कंप्लीट हो जाता है इन लेस देन हाफ द टाइम, आधा टाइम मान लो। एंड इट टेक टू प्ले लिमिटेड ओवर मैच। लेकिन यहाँ जो क्रिकेट था इसमें लिमिटेड ओवर का मैच होता था, ये पता नहीं कब खत्म हो नहीं हो, खेलते रहे, कोई टिक गया। द शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, एक शॉर्ट एंड वर्जन है मॉडर्न क्रिकेट का। एंड नाउ नेक्स्ट I explain in next video, my dear student. Okay, and one thing, you write all the word meaning of this chapter in your notebook. Okay.